वहां नहीं छोड़ दिया था यार। Difference between void agreement and illegal agreement है ना? Illegal agreement. और ये हम लोग टाइप्स ऑफ कर रहे थे ना एग्रीमेंट? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो लिखिए नाउ नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। संस्कार क्या मान करो, महिमा। So on the basis of क्या बोले? हाँ, on the basis of performance. on the basis of performance, ठीक है। फर्स्ट वन executed agreement। क्या बोले? executed अभी 11 बजे दीजिएगा। executed agreement देखो, when all the parties to the contract have performed their obligations, Sir, repeat. when all the parties to the agreement have performed their obligation, it is known as executed agreement. It is known as executed agreement. When all the parties to the contract have executed their obligation, it is known as executed agreement. ठीक है, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट में जितने ही पार्टी हैं और जिन पार्टी का जो दायित्व है, उनको जो काम करना है, अगर वो कर देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट क्या हो गया, एग्जीक्यूटेड हो गया। ठीक है, अगर कोई नहीं कर रहा है, किसी के बिहाफ पे बचा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट इज एग्जीक्यूटरी। ठीक है, लेकिन जब ऑल द पार्टीज परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नोन एज व्हाट, Executed agreement. ठीक है, Execute. नेक्स्ट एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी executory agreement, an agreement where parties have not executed their obligation. So an agreement के बाद An agreement where parties have not executed their obligation is known as executory agreement.
is known as executory agreement. अब अगर मान लो किसी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी, ठीक है, और एक पार्टी अपना काम कर दिया, दूसरा पार्टी नहीं किया, तो उसको बोलेंगे बाइलेटरल एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट, ठीक है, सॉरी यूनिलैटरल, उसको क्या बोलेंगे, यूनिलैटरल। मतलब अगर दो पार्टी में से एक पार्टी अपना काम कर दे रहा है, दैट इज नोन एज यूनिलैटरल। लेकिन दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी अपना काम नहीं किया, उसको क्या बोलेंगे, बाइलेटरल, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव दो टाइप का होगा, एक क्या होगा यूनिलैटरल, दूसरा क्या होगा बाइलेटरल। यूनिलैटरल में क्या होगा, एक पार्टी अपना काम करती है, दूसरा नहीं किया है, और बाइलेटरल में क्या होगा, दोनों काम नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ फॉर्मेशन। एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट में कौन कौन आएगा, दो को क्या बोल रहा है, यूनिलैटरल बाइलेटरल, यूनिलेटरल और बाइलेटरल, सर यूनिलेटरल, यूनिलैटरल UNILATERAL और बाइलेटरल। सर यूनिलेटरल किस में आएगा, यूनिलैटरल मतलब हो गया जिसमें मतलब कोई एक पार्टी अपना काम किया, एक पार्टी नहीं किया, ठीक है, वो उसका टाइप है एग्जीक्यूटिव का सब टाइप, ठीक है। और बाइलेटरल क्या हो जाएगा, मतलब इसमें दोनों पार्टी अपना काम नहीं किया है। नाउ नेक्स्ट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ फॉर्मेशन। On the basis of method of formation, पहला एक्सप्रेस एग्रीमेंट, दूसरा इम्प्लाइड एग्रीमेंट। दो टाइप का होता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। पहले लिख लो फिर समझाते हैं। एक्सप्रेस में लिखो, इट कैन बी क्रिएटेड, it can be created expressly, it can be created expressly by writing or spoken, by writing or spoken. It can be created expressly by writing in words or by spoken. Next लिखो, implied में लिख लो, if an agreement is not spoken in words. So implied या employed? Implied, IMPLID, implied. If an agreement is not, सर रिपीट कीजिएगा तो, EMPLIED, implied agreement. If an agreement is not expressed in words or spoken by the parties, or spoken by the parties, then the conduct of the parties, then the conduct of the parties are kept in view. Depend तो नहीं आया क्लास। Then the conduct of the parties are kept in view. अब इस दोनों को समझना, ठीक है। पहले एक्सप्रेस एग्रीमेंट। एक्सप्रेस एग्रीमेंट मतलब क्या हो गया सर, द टर्म्स एंड कंडीशंस। क्या हो सकती है, काय तो दे लगता है, व्यू लो खुशी बता दी, ठीक है। चलो, तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया सर,
कि द एग्रीमेंट विच नीड्स टू बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड, ठीक है, जिसको हमको बोल के या लिख के बताना पड़े। जैसे हम बोले ठीक है कि कल तुम लोग हम एग्जाम लेंगे, तो ये क्या हो गया एक्सप्रेस एग्रीमेंट कि आई एम इन्फॉर्मिंग यू, हम आप लोग को बता रहे कल एग्जाम होगा। हम बोले एग्जाम में यू हैव टू राइट इन दिस पैटर्न, वो सारा एमसीक्यू क्वेश्चन होगा और आपको सिनरी लिखना है, तो ये क्या हो गया एक्सप्रेस हो गया, आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, ऐसे ये एग्रीमेंट हो गया। इम्प्लाइड में क्या होता है, इम्प्लाइड में कुछ बोला नहीं जाता है। सुयस कहाँ दिख रहा है, इम्प्लाइड में कुछ बोला या लिखा नहीं जाता। जैसे हम लोग जब रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं खा के, तो होटल के बाहर गार्ड खड़ा होता है ना, सलाम ठोकता है, तो इम्प्लाइड है कि जब तक उसको आप 10 रुपए नहीं दीजिएगा वो आपको सलाम करते रहेगा, ठीक है, वहां कुछ वो बोलता नहीं है। क्लास में आते हैं सर, सर आ गए तो हम लोग अपने आप खड़े हो जाते हैं, तो एक रिस्पेक्ट वो क्या एम्प्लॉयड है, सर को खड़े होने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो वैसा एग्रीमेंट जिसमें कुछ बोलना ना पड़े, जिसमें कुछ एक्सप्रेस ना करना पड़े और पार्टीज के कंडक्ट समझ में आ जाए, ठीक है, कि वो एग्रीमेंट करना है, उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयड। पुराने हिंदी फिल्म में क्या होता था, विलन बैठा हुआ रहता था एक तरफ ऐसे चेयर पे, उधर हीरो आ गया और इधर उसका 3-4 गुंडा लोग है, ऐसे एक बार गर्दन हिलाया, मतलब क्या है कि मार देना है, चलो। तो क्या कौन सा एग्रीमेंट हो गया वो, इम्प्लाइड एग्रीमेंट। वहां कुछ बोला नहीं है ना, वहां कुछ लिखा, सिर्फ क्या क्या इशारा किया कि अब खेल खत्म, तो क्या हो जाएगा इम्प्लाइड एग्रीमेंट। तो इम्प्लाइड में ध्यान रखना है, वहां पे कुछ एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है, ना इधर बोल के और ना इधर लिख के। क्लियर बात? यस सर। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट लिखो, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स टाइम, 10 मिनट का टाइम देते हैं, तुम लोग लिख के बताओ जल्दी हमको कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या क्या डिफरेंस होगा। और जिसका गूगल का किया हुआ रहेगा समझ लेना। फिर सब अपना भाई कैमरा को जल्दी से, निकिता, मनीषा, दिव्या, दिव्या टर्न द कैमरा। और कौन है, दिव्या, सुबह दिव्या, अब्दुल। सर कैमरा खराब है सर, सर दूसरे फोन से कनेक्ट। अच्छा ठीक है, चलो थक चुका हूँ ब्रो, नेटवर्क इश्यूज सुन के। सर कितना पॉइंट्स लिखना है सर डिफरेंस में? जितना लिख सको। बैक का नोट देख सकते हैं ना, क्या बैक वाला नोट देख सकते हैं ना। क्या बोल रहा है? पीछे का बोल रहा नोट है लिख सकते बोल रहा है। अच्छा लिख ले।
सर हो गया। हो गया? बाकी लोग? तो 3 लिखे हैं सर। ठीक है, Yes, sir, हो गया। ठीक है। और सर 4 पॉइंट्स लिखे हैं। चलो ठीक है, So मैं भी 4 सर points। हो गया, सर हो गया। वेरी गुड। सर हो गया। कोई और लिख रहा है? तन्वी, आदर्श, मनीषा? चलो खुशी, क्या क्या लिखे बताओ तो। सर मैं, हाँ, सर फर्स्ट जो डिफरेंस लिखे है ना, वो लिखे हैं इट इज कॉन्ट्रैक्ट में इट इज नेसेसरी टू इनफोर्सिबल बाय लॉ, और एग्रीमेंट में लिखे हैं इट इज नॉट नेसेसरी टू इनफोर्सिबल बाय लॉ। और सेकंड पॉइंट लिखे हैं कॉन्ट्रैक्ट में कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लीगल होता है, और एग्रीमेंट में लिखे हैं कि ये इकोनॉमिकल होता है, सोशल और रिलीजियस हो सकता है। ठीक है, मतलब इट इज नॉट और लीगल। हाँ, और थर्ड पॉइंट में लिखे हैं सर कि जो एग्रीमेंट होता है ना वो सिर्फ वैलिड नहीं, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना वो वैलिड एग्रीमेंट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, पर जो एग्रीमेंट है ना वो 3 टाइप का है, वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल। और जो फोर्थ पॉइंट है ना उसमें ये पॉइंट आगे हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट भी 3 टाइप का होगा, वॉइड, वैलिड और वॉइडेबल। इस पर को काट दो। ओके सर। इसलिए तुम सकती हो कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ इट्स नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। यस सर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नैरो कॉन्सेप्ट हुआ और एग्रीमेंट जो है वाइडर कॉन्सेप्ट हुआ ना। सही है एकदम। और सर फिर फोर्थ पॉइंट में हम इसका फीचर्स लिखे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट का फीचर्स है वो है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और सेकंड फीचर है लॉफुल कंसिडरेशन, थर्ड फीचर है लॉफुल ऑब्जेक्ट, फोर्थ फीचर है इसका फ्री कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टीज, और एग्रीमेंट वो हटा दो, वो हटा दे, फ्री कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज। वो हटा दो। और इसका एग्रीमेंट के फीचर्स में लिखे हैं म्यूचुअल कंसेंट्स ऑफ ऑल पार्टीज। वो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट लिखे खुशी, क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट, म्यूचुअल कंसेंट नहीं होगा ना तब तक कॉन्ट्रैक्ट हाँ। होगा नहीं, फिर वो क्या होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोएशन आ जाएगा वहां पे। इसीलिए उस तो पॉइंट सर फ्री कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज और म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज सेम ही हुआ। सेम ही हो गया ना, एक ही चीज हुआ। ओके सर, तो इसमें लिखे हैं दूसरा पॉइंट क्लियरली कम्युनिकेटेड, और सेकंड पॉइंट लिखे है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, वेरी गुड। ओके सर। मोटा मोटी खुशी पॉइंट्स बता दी है, ठीक है, फिर भी वो रिपीट कर देते हैं। ठीक है, जो लिखा है मिला लेना, जो नहीं लिखा है लिख लेना। पहला पॉइंट क्या था? सबसे बड़ा डिफरेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सेक्शन के बेसिस पर, ठीक है, कि एग्रीमेंट को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है और कॉन्ट्रैक्ट को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो लिखो, कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड, कॉन्ट्रैक्ट इज सर एग्रीमेंट में सर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बोल सकते हैं क्या, और कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट एंड पॉसिबिलिटी? हाँ बोल सकते हैं। होता है ऑपरेशन सर कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट इन पॉसिबिलिटी होता है हो जाएगा ना, वही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जो एग्रीमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और सर हाँ बोलो, बहुत क्यों हो गया? चलो हम बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन H. Contract is defined under section 2 subsection H of Indian Contract Act 1872 of Indian Contract Act 1872, whereas agreement is defined under section 2 subsection E. Whereas Sir, repeat. Whereas agreement is defined under section 2 subsection E of Indian Contract Act 1872. Of Indian Contract Act 1872. सब सेक्शन कितना बोले?
E. E for elephant. ठीक है? Next लिख लो definition. Right? Every agreement in contract लिखना. Contract लिखना. Every agreement which is enforceable at law. Every agreement which is enforceable at law is called as contract. Is called as contract. Writing an agreement. Every promise and every set of promise every promise and every set of promise forming consideration for each other, forming consideration for each other is known as agreement. Is known as agreement. Writing contract. A contract intends to create. A contract always intends to create a legal relationship. A contract always intends to create a legal relationship. Agreement लिखो. It is not essential in agreement. It is not essential in agreement to create a legal relationship. Sir, agreement was essential. It is not essential in agreement to create a legal relationship. ठीक है? Next लिखो. Only valid agreements in contract लिखना. Only valid agreements are called as contract. Only valid agreements are called as contract. Agreement में लिखो. An agreement can be both legal or illegal. An agreement can be both legal or illegal. ठीक है?
नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, every contract is an agreement. In contract, every contract is an agreement. Agreement लिखना, but every agreement is not a contract. Sir, repeat. Write in contract, every contract is an agreement. Agreement लिखो, but every agreement is not a contract. But every agreement is not a contract. डन, कितना पॉइंट्स हो गया डिफरेंस में? 5 सर। 5, ठीक है। एक और लिख ले, राइट इन कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट इज बेस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट. Agreement is base of any contract. Write in agreement, the offer after acceptance. Agreement लिखो पहले. हाँ बोलो. सर डिफरेंस लिखा रहे हैं. क्या बोल रहे थे? सर डिफरेंस लिखा रहे हैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का. हाँ छूट गया तुम्हारा. An agreement क्या था? हाँ, the offer after acceptance. The offer after acceptance becomes the base of an agreement. Becomes the base of an agreement. Becomes the base of the agreement. डन, कोई दिक्कत? अब एक पॉइंट लिख लो, हम लोग जो पॉइंट लिखे ना, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट सॉरी ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. उसमें क्या है? एग्रीमेंट आएगा, ठीक है, वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, जस्ट एक जगह लिख लो. तो हेडिंग दे दो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, राइट. लिखो, पहला है फैमिली एग्रीमेंट्स. फैमिली एग्रीमेंट्स. दूसरा है सोशल एग्रीमेंट. तीसरा है एग्रीमेंट बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज. एग्रीमेंट बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज. Agreement by incompetent parties. Next, agreement in absence of free consent. Agreement in
absence of free consent. Next, an agreement for Sir, actions बोलो sir. absence of free consent. An agreement for unlawful object and consideration. An agreement for unlawful object and consideration. Sir, unlawful object. And consideration. ठीक है? Last, agreement which is expressly declared void. लास्ट क्या बोले? Agreement expressly declared void. Agreement expressly declared void. अब इसमें हम बताए थे कुछ कि कौन कौन सा एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड होता है, ठीक है? तो इसका ना 10 ठो लिस्ट है, उसको लिख लो बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. ठीक है, तो लिखो. नंबर ए, कौन कौन सा एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड है, मतलब अगर आप वो एग्रीमेंट करते हो तो वो वॉइड ही होगा, वैलिड नहीं होगा. सो राइट, नंबर ए, agreement by or with incompetent parties. Agreement by or with incompetent parties. Section 11. Section 11. Next, agreement made under a bilateral mistake. Agreement made under a bilateral mistake. Agreement made under a bilateral mistake of fact between the parties. Of fact between the parties. Third, agreements, comma, the object and consideration are which, sorry, agreement, comma, the object or consideration, of which is unlawful. Of which is unlawful. Next, agreement made without consideration. Agreement made without consideration. Next, बोले? Yes, sir. Agreement in restraint of marriage. Agreement in restraint of marriage. RESTRAINT. Restraint of marriage.
Next, agreement in restraint of trade. Agreement in restraint of trade. Next, agreement in restraint of agreement in agreement in restraint of legal proceedings. Agreement in restraint of legal proceedings. जैसे पहले मूवी में क्या होता था, गवाह को कोर्ट नहीं पहुंचने देता था, कॉन्ट्रैक्ट लिया का लिया कि जो गवाह है वो कोर्ट तक नहीं पहुंचेगा, उस रास्ते में गायब कर देंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप कानूनी काम में बाधा डाल रहे हैं। जैसे जो अतिक्रमण हटाया जाता है तो उसके लिए लॉ पास होता है, उसमें कोई रोक करे तो पुलिस को जेल में डाल सकती है, बिकॉज वो लीगल प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। एग्रीमेंट the meaning of which is uncertain. Next, agreement the meaning of which is uncertain. Next, agreement by way of wager, WAGER. Agreements by way of wager. वेगरिंग का मतलब क्या होता है समझना। वेगरिंग मतलब होता है ना कि हम ऐसा करेंगे अगर ऐसा होगा, दैट मीन्स डूइंग और नॉट डूइंग ऑफ समथिंग is depending upon happening or non happening of certain uncertain event. मतलब वो चीज फ्यूचर में हो सकता है भी, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम बोले, हम और कौन, खुशी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े थे, ठीक है, रोड क्रॉस करना था। खुशी को बोले कि खुशी अगर यहाँ से एक पीला कार पास करेगा तो तुमको 500 रुपया देंगे, और अगर रेड कार पास किया तो तुम 500 रुपया दोगी। ठीक है, तब ये जो 500 देना किस पे डिपेंड है, पीला या रेड कार पास करने पे, जो क्या है, अनसर्टेन है, हो भी सकता है भी, नहीं भी हो सकता। तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट हम क्या बोलते हैं, वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वही है वेगर। नेक्स्ट लिखो, एग्रीमेंट बेस्ड ऑन इम्पॉसिबल इवेंट। एग्रीमेंट based on impossible event. Next, agreement to do impossible acts. Agreement to do impossible acts. कितना, 11 सब पॉइंट हुआ? यस सर। और 6 मेन पॉइंट हुआ होगा? यस सर। ठीक है, तो 7वां 8वां मेन पॉइंट लिख लो। 7वां लिख लो पॉलिटिकल एग्रीमेंट, एंड द 8th पॉइंट इज रिलीजियस एग्रीमेंट। सर 8 पॉइंट रिलीजियस एग्रीमेंट और 7 पॉइंट पॉलिटिकल एग्रीमेंट। डन।
Yes, sir. The agreement based on क्या बोले थे सर लास्ट वाला? To do based on. एग्रीमेंट बेस्ड ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, और लास्ट था एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। डन। ये जितना पॉइंट लिखवाए सब एक्सप्लेन किया हुआ, एक बार तुम लोग पढ़ लो, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर एक बार सर एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट बता दीजिए ना। एग्जीक्यूटेड मतलब हो गया कि सब जितने भी पार्टीज हैं वो पार्टीज अपना काम कर दी हैं, जिनका जिनका जो दायित्व था कॉन्ट्रैक्ट में वो निभा दी। और एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया कि किसी एक पार्टी के बिहाफ पे या दोनों ही पार्टी अपना काम नहीं किया है। तो अगर एक पार्टी नहीं किया तो उसको बोलेंगे यूनिलैटरल, और दोनों नहीं किया तो क्या करेंगे? बायलैटरल। Bilateral.